Welcome to our channel, Ruturaj 97. Today i20, the new one. It's a turbo engine, turbo petrol one. So talking about the features, it gives you, compared to the old i20, we get a projector type headlamps. Here you get a cornering lamp. So when you take a turn, automatically the light will turn out at the side. So currently the potholes and all, you are able to see what's there. The LED lights are placed over here, which gives you a stylish look. You get a projector fog lamp. First time in the i20 they have come with the LED projector headlamp. Then you get a diamond cut alloy wheels, R16. In i20 they have come up with the electrical sunroof with a shark fin antenna. The door handles are stylishly designed and the chrome door handles and the chrome garnish. So here you are having this fuel lid. Yeah. Okay. Design. You can open it directly. Okay. Yeah, one here you are getting here i20 also logo. Design, yeah. And LED lights. V-shaped LED lights. Okay. So LED lights basically for all variants or only for higher variants only? For the higher variants. Higher variants only. Time. Okay. Over here you get 3 11-liter boot space. So this boot space is lesser compared to previous one or slightly bigger? More than i20. Previous i20. So hook, light and everything is there? Yeah. Okay. And spare wheel you are getting is normal one? Not normal ever. one, Okay. R15. R15, okay. Back you will be adding 2 sensors with the camera over here. Only 2 are there, not 4 like... No, 2 sensors with the camera. Where is the camera place? Here. Okay, down. Yeah. So you are having this black part and all, gives 40 look to car. Okay. Wonder reflectors and all. So if you see from back side, the car looks totally different. Totally. Yeah. तो दोस्तों बात करें यहाँ पर इंजन की, तो इस गाड़ी में आपको 1 लीटर यानी 998 सीसी का टर्बो GDI 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी हम बात करें मैक्सिमम पावर की, तो यहाँ पर आपको 118.36 bhp एट द रेट 6000 rpm मैक्सिमम पावर मिलती है और मैक्सिमम टॉर्क आपको 171.62 न्यूटन मीटर एट द रेट 1500 से लेकर 4000 rpm तक मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको आप देख सकते हैं डैम्पिंग वगैरह अंदर से कुछ नहीं है, गाड़ी का जो पतरा है वो डायरेक्टली आपको दिख जाता है। क्रेटा में भी ऐसा ही है, पहले वाली जो फर्स्ट जनरेशन क्रेटा है जो मैंने लास्ट वीक लाई थी रिव्यू के लिए, उसमें भी ऐसा ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दोस्तों बैटरी, फ्यूज बॉक्स वगैरह सब आपको दिख जाएगा। तो देखिए किस तरह से। तो वी कैन गो टुवर्ड्स इंटीरियर नाउ। So here we are getting keyless entry options. We are having only on this door, not that one. Only on the driver side. Okay. So if you see here, we are getting all the dark interiors. Friends, dark interior is basically best because you get a sporty look. Plus maintaining is very easy. If you see dual tone and all, which we get in sedan cars and all, it is very difficult to maintain. I am saying from my own experience. I am having Dzire from almost 6 years I am driving, and if you see the dual tone, it's very difficult to maintain. So I am feeling very good to see this. And you are getting good here. You can see ORVM controls, power windows, everything you are getting here. ORVM, you can electrically control it. Okay, you can see guys, you can change it like that. And bottle holder, you can see the space is slightly more. You can keep your files and also that space you are getting here. And this is DCT variant, so no clutch is there. You can see accelerator, brake, and you are getting dead pedal here. And if you see seat, we are getting seat height adjustment. You can adjust the height as well of the seat. You can adjust it. Then interior wise, you are getting the touchscreen music system with the audio video navigation. Then it has the reverse parking sensor camera. Overall, if you see, whole interior has been totally different. Totally different, correct. You get the fully automatic AC, meaning you just need to press the auto mode once and just need to set the AC temperature once. Next time when you shift, the same temperature will set on its own. Okay. So Automatically it will be set to same one. Correct. So you need not need to set it again and again. Steering mounted control you will get, like you can control the volume. There is a voice recognition, like you can receive and cut the call. There is a cruise control mode, meaning after 30 speed you can just press the cruise control and release. You can release your pedal. Correct. The car will automatically move. You just need to increase and decrease from the steering. So the smart features are there. That's a new thing which has come, which is an air purifier. It purifies the air quality inside the cabin. Okay. Actually, I was saying you can start the engine because it will show the blue color light, so it will look more attractive, no? So if you want, you can start the car and see. So you can start the car actually. It's in P. Yeah. Nice. I'll repeat it again. Yeah, sure. The new thing which has come, you get the air purifier that purifies the air quality inside the cabin. It will automatically purify the air quality. It shows you the different color like red, yellow, green and blue. Interior
wise you get a Bose music system with a 7 speakers. In every variant you are getting totally dark only interior or Dark. dual tone is there? Dark. No, only dark interior. So how about the rear comfort? Leg Here space? you get a rear AC vent. There's a charging point. Plus you can keep the phone also. Initially Small for the holder old- space is given. Yeah, middle space is given. Previously for the old i20 there was no space over there. Back armrest also you get with the cup holder. Plus we are getting good space like Baleno and all we are getting that when knee room is sufficient. Correct. Okay, and even we are getting parcel tray You get a also. Bose music system. So for all variants we are giving this Bose or only for higher From variant, Asta. not for base variant. No, only Okay. from Asta and Asta option. And what about the sunroof? Only getting for this Ashta variant or Asta optional. Only. Not for the okay, not for second and all? wireless charging which you get adaptable for certain phones like iPhone 10, Samsung 8 series and all. You just need to keep your phone there and it charges. Okay? Any phone it may be iPhone or normal phones also which No, are no, having no. that The feature. phone has to be adaptable basically. Ah. So whichever phone is adaptable you can keep like the S8, Samsung 8 series. Plus you are having iPhone this 10. also. So USB normal. charging also. Place you can place the Plus socket. here you can put USB also. USB, correct. And there are 2 charging points. So you can. Interior wise also there is a 7 speakers, 4 door speakers, 1 woofer at the back and 2 tweeters. And this design is all is totally changed, no? Totally This is- changed, yeah. And this is the fully automatic. When you press in the auto mode, the car, the set temperature will set on its own. You need not need to set it every time the temperature. What about this touch screen? The dashboard design, yeah. Yeah. So the design is increased. The screen is wider, more compared to the old i20. This is having almost same features like offer in Creta, Venue and all or Yeah. something new? It's the same. Okay. So design and all everything is totally This changed. car is also come with the Blue Link technology, Okay. meaning through your phone, You through can- the app, you can start the car, you can put on the AC. There are different 36 features in this. So sunroof will open and show it. Yeah. So this is Normal how size the sunroof. sunroof opens. Yeah, normal. Otherwise you can keep the glass closed also and you can keep Yeah, this yeah, open. that also. also can be done. Now in this situation, the glass will be open and the The sunroof will be offered to only top variant only, top not variant second only, variant not also. the second variant. These are the small features like a sunglass holder you get over here. These are for the lights. We are getting yellow lights, not white ones. And not white. And this one. We are having sunshade. We are having So, this vanity vanity mirror mirror, also. And these are having these 2 modes you can adjust. This is the feature of the Blue Link. This is meaning SOS, meaning save our souls. Like say in case of an We are emergency. offering the touchscreen watch with the car that way or just Blue Link. No, then this is like From mobile only you can Yeah, operate. from mobile only you can You have operate. to download that app and you have to. Yeah, correct. You need to download that app. This is a roadside assistance. In case of a breakdown, car breakdown, you can just press the button. Call goes to the call center. They'll call you back. And the Right. nearest showroom will provide Much assistance. advanced we can say. Yeah, We are much getting. advanced. So we'll see the instrument cluster here guys. Okay, and you can see here you are getting speed in digital plus RPM, you can see fuel level also, and here you can see all the details like till now it is 262 kilometers drive on the car is fuel economy, you can see average and all, and the temperature outside you can see. So everything is digital like, so it's good, like you will almost see similar to Aura and all, but slightly color and all they have changed, so it looks like different slightly, and this system almost looks new like, and even they are having the vents are sizes slightly. Cold glove box. Okay, here we You are can getting. keep chocolates and over here it melts. Like so keeping it Some over cars are here. having it here. Okay, you are Yeah. offering it here. Yeah, we have it over here. This you get a sliding armrest. Okay, you can Storage. push it backside also. Yeah, yeah. The storage. Okay, okay, but this is not cool. This Okay, not- that one is cool. That is a full glove. You get a much more space compared to that. So if you see guys, this air vent size and all slightly small size. If you see new Creta and all almost having small size, but no problem guys, you will be getting the cooler and car will get cooler very fast, so no issues. And you can see this is totally changed. If you compare this with previous one i20, you are getting totally different. Here you can see all interior is getting different one. And interior quality also always good, I can say i20 is good. Build Slightly you will miss the mileage slightly in this. Yeah, in case Mileage of a turbo, it's okay, slightly less mileage, but no More than issues. You are power you getting, get. yeah, but still you are getting good features and all. You can see one cruise control is there. Here you can see your infotainment controls you can set, and steering is also lighter. You can see if you see, 6 airbags. yeah. So in top variant only you are offering 6 or airbags. top variant. Top variant. Top variant. Otherwise, So this variant now having 6 airbags. 6 airbags. Yeah. Okay. And if you see the steering size and all, you are getting lighter steering like Creta and all. If you see Creta also, they are offering same this design, so looks quite good.
and you can see here you are getting some piano finish, black finish and also overall is good, you can say dashboard. Here you are getting tweeter also, and you can see the dashboard design here slightly you are getting slope like, so looks quite simple and decent, I'm saying. Okay, this way. It also has a wheel with some obstacles on. Okay, you can move the steering light. Okay, so you are getting the direction exactly. Direction also. Okay, so exactly you can park. Correct. Okay, perfect. So we'll have the test drive now and see. So this is DCT variant. You can see not having clutch. Here we are having dead pedal. Okay, so we'll drive this and see. तो गाड़ी को चलाकर हम देखेंगे आज नई वाली 2020 i20 कैसी है गाड़ी चलाने में। तो ये उन्होंने टॉप वेरिएंट दिया है दोस्तों टेस्ट ड्राइव के लिए, आप देख सकते हैं ये एस्टा ऑप्शन टर्बो डीसीटी वेरिएंट है। और बात करें इसके प्राइसिंग की तो ये गाड़ी का दोस्तों ये जो वेरिएंट है इसका एक शोरूम प्राइस है 11.18 लाख रुपीज, जो ऑन रोड जाएगा 13.18 लाख रुपीज तक, यानी ऑलमोस्ट 2 लाख का दोस्तों डिफरेंस है। तो 13 लाख आप पकड़ सकते हैं क्योंकि 13 लाख से ऊपर जाएगी 13.18 मतलब ऑलमोस्ट आप पकड़िए 13.20, क्योंकि कुछ एसेसरीज वगैरह छोटे मोटे ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट थोड़े से हजार तो होते हैं एडिशनल, तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस गाड़ी में टोटल उन्होंने दोस्तों पेट्रोल में 19 वेरिएंट्स दिए हैं और डीजल में आपको 5 वेरिएंट्स मिलते हैं। वो भी वेरिएंट्स कौन से हैं और उनका एक शोरूम जो प्राइस है हर एक वेरिएंट का क्या है उसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल टॉप वेरिएंट लाया है रिव्यू के लिए हमने, क्योंकि दोस्तों टॉप वेरिएंट में वो सभी फीचर्स नेसेसरी फीचर्स मैं कहूंगा जो होते हैं जो आपको रिव्यू के दौरान हम दिखा सके, क्योंकि बेस वेरिएंट्स में बहुत से फीचर्स मिसिंग होते हैं। तो इसके आगे हम हर एक वेरिएंट दोस्तों स्टार्टिंग से टॉप तक पेट्रोल और डीजल में एक शोरूम प्राइस के साथ भी डिस्कस करेंगे। Tire pressure, just press on it. This one? No, not the flute, yeah. So press another, press again. Even directions you are getting here. Yeah. Again, press it. You get a Okay. tire pressure monitoring. So also tires, which pressure is having. So guys, currently you can see here 47, 44, 46 and 45. This So feature is not slightly any of the currently competitors of this i20. So you get. you're not having in Tata cars or any Maruti cars also they are not giving. You get specific features. So this variant we can say giving too much features which any person expect from any Also there is hatchback. the LED lighting, but in currently it's daytime, so you won't be able to. So you are saying basically we are getting this all features in top variant only. So Yeah. if you are going for top variant you will be getting all these features. All these features. Okay, but if you go for base model and all many features will be You will missing. be missing out. तो ये गाड़ी का दोस्तों ARI माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो है 20.28 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे माइलेज क्लेम होता है 17.18 किलोमीटर और जहां पर आपको सिटी माइलेज क्लेम होता है 12.6 किलोमीटर पर लीटर। तो ये 7 स्पीड DCT यानी ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन टाइप का वेरिएंट है। तो गाड़ी का बूट स्पेस है 311 लीटर्स का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है गाड़ी की 37 लीटर्स की, फ्रंट सस्पेंशन आपको मैकफेरसन स्ट्रक टाइप का मिल जाता है और रियर सस्पेंशन आपको कपल टॉर्शन बीम एक्सेल का मिल जाता है। गैस व्हील टाइप के आपको शॉक अब्जॉर्बर्स मिलेंगे और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। लेंथ है गाड़ी की 3995 mm, विड्थ है गाड़ी की 1775 mm, हाइट है गाड़ी की 1505 mm और व्हील बेस है गाड़ी का 2580 mm और दोस्तों 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं हम इसके हर एक वेरिएंट की। तो स्टार्टिंग वेरिएंट है दोस्तों, फर्स्ट वेरिएंट है वो है मैग्ना जिसका एक शोरूम प्राइस है 6.79 लाख रुपीज। सेकेंड वेरिएंट है दोस्तों स्पोर्ट्स जिसका प्राइस है 7.59 लाख रुपीज। थर्ड वेरिएंट है स्पोर्ट्स DT जिसका प्राइस है 7.74 लाख रुपीज। फोर्थ वेरिएंट है स्पोर्ट्स IVT जिसका प्राइस है 8.59 लाख रुपीज। फिफ्थ वेरिएंट है वो है अस्टा जिसका प्राइस है 8.69 लाख रुपीज। सिक्स वेरिएंट है वो है स्पोर्ट्स IVT DT जिसका प्राइस है 8.74 लाख रुपीज। सेवेंथ वेरिएंट है स्पोर्ट्स टर्बो IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, इसका प्राइस है 8.79 लाख रुपीज। एट वेरिएंट है वो है एस्टा DT जिसका प्राइस है 8.84 लाख रुपीज। नाइन्थ वेरिएंट है स्पोर्ट्स टर्बो IMT DT जिसका प्राइस है 8.94 लाख रुपीज। टेंथ वेरिएंट है वो है एस्टा ऑप्शन जिसका प्राइस है 9.19 लाख रुपीज। 11th वेरिएंट है वो है एस्टा ऑप्शन DT जिसका प्राइस है 9.34 लाख रुपीज। 12th वेरिएंट है वो है एस्टा IVT जिसका प्राइस है 9.69 लाख रुपीज। 13th वेरिएंट है वो है एस्टा IVT DT जिसका प्राइस है 9.84 लाख रुपीज। 14th वेरिएंट है वो है एस्टा टर्बो IMT जिसका प्राइस है 9.89 लाख रुपीज। 15th वेरिएंट है वो है एस्टा टर्बो IMT DT जिसका प्राइस है 10.04 लाख रुपीज। 16th वेरिएंट है वो है एस्टा टर्बो DCT जिसका प्राइस है 10.66 लाख रुपीज। 17 वेरिएंट है वो है एस्टा टर्बो DCT DT जिसका प्राइस है 10.81 लाख रुपीज।
18 वेरिएंट है वो है एस्टा ऑप्शन टर्बो डीसीटी जिसका प्राइस है 11.17 लाख रुपीस। और 19th और लास्ट वेरिएंट है जो है एस्टा ऑप्शन टर्बो डीसीटी डीटी जिसका प्राइस है 11.32 लाख रुपीस। तो ये सब एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों पेट्रोल वेरिएंट्स के। अभी हम बात करेंगे डीजल वेरिएंट्स की। तो डीजल में आपको 5 वेरिएंट्स ऑफर किए जाएंगे। तो स्टार्टिंग है मैग्ना डीजल जिसका प्राइस है 8.19 लाख रुपीस। सेकेंड है स्पोर्ट्स डीजल जिसका प्राइस है 8.99 लाख रुपीस। थर्ड वेरिएंट है स्पोर्ट्स डीजल डीटी जिसका प्राइस है 9.14 लाख रुपीस। फोर्थ वेरिएंट है वो है एस्टा ऑप्शन डीजल जिसका प्राइस है 10.59 लाख रुपीस। फिफ्थ और लास्ट वेरिएंट है डीजल में जो है एस्टा ऑप्शन डीजल डीटी जिसका प्राइस है 10.74 लाख रुपीस। तो ये सब एक शोरूम प्राइस है भाई। अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो और मानो कि अगर आप पेट्रोल में जा रहे हो तो आपके पास 19 ऑप्शन है। तो 19 में से भाई कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या फीचर्स के साथ आपको गाड़ी लेनी है, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि भाई 19 वेरिएंट्स तो बहुत होते हैं। लोग ज्यादातर अभी ZXi VXi जो हमारे जो मारुति की गाड़ियां होती है जिनमें VXi प्लस होता है, ZXi प्लस, तो भाई इनमें कुछ थोड़े से फीचर्स और प्राइसिंग का डिफरेंस होता है। फिर भी दोस्तों ये गाड़ियों में भी मारुति की लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ZXi ले या ZXi प्लस ले, कितना प्राइस डिफरेंस है। तो इतना सिंपल होने के बाद भी लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो भाई इस गाड़ी में तो उन्होंने अभी 19 दिए हैं वेरिएंट्स। तो 19 में से आपको कौन सी लेनी है बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर भी आप अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास जाओगे और आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स, आपके क्या बजट है वो बताओगे तो उनमें जो नेसेसरी फीचर्स के हिसाब से आपके लिए कौन सा वेरिएंट सही रहेगा वो आपको बता देंगे दोस्तों। और डीजल में तो खाली 5 ही वेरिएंट्स है। तो अगर आपको डीजल में चाहिए तो भी आप जा सकते हैं। पर दोस्तों इन प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी चलाने में भी अच्छी है, एक नए प्लेटफॉर्म पर बनी है क्योंकि बहुत ही अलग दिखती है अगर आप पहले की i20 से कंपेयर करो तो। पर दोस्तों अगर मेरी राय में बोलो तो ये 13 लाख के ऊपर जाता है ये टॉप वेरिएंट वगैरह। जो लोग ज्यादातर फीचर्स वगैरह जिनको पसंद है, जिनको सभी फीचर्स चाहिए, सनरूफ वगैरह, वो ऑब्वियसली टॉप वेरिएंट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन दोस्तों i20 जैसे सेगमेंट की गाड़ी के लिए 13 लाख प्लस तो मेरे हिसाब से बहुत होता है क्योंकि अगर आपको एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए 5 सीटर तो भाई ब्रेजा, वेन्यू वगैरह इस तरह की गाड़ी, इवन सेल्टोस का भी दोस्तों बेस वेरिएंट, सेकंड बेस वेरिएंट मैं कहूंगा नई वाली क्रेटा, ये भी दोस्तों 11 लाख से ऑलमोस्ट शुरू होता है मैं कहूंगा। तो भाई ऐसी i20 की सेगमेंट की गाड़ी के लिए 13 लाख यूज करना मुझे तो सही नहीं लगता दोस्तों। फिर भी अगर आपको i20 गाड़ी पसंद है और आपको Hyundai ब्रांड की यही गाड़ी लेनी है नई वाली तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। गाड़ी में कोई बुराई नहीं दोस्तों, गाड़ी में सभी फीचर्स है, फुल्ली लोडेड है गाड़ी में कहूंगा और फीचर्स वगैरह सब है। फिर भी अगर आपको लेनी है तो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों बजट के हिसाब से मुझे लगता है कि ये गाड़ी का प्राइसिंग थोड़ा सा हाई है। फिर भी गाड़ी बुरी है ऐसा मैं नहीं कह सकता क्योंकि गाड़ी चलाने में बहुत ही अच्छी है। तो आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। So if you see till now how many cars you got booking already in Goa? Yeah. It will be more than 100. More than 100. So what is how people are buying, means manual getting more or automatic you are getting more response? Both are equal. We have the new technology which is called IMT. So even that is moving very faster. So both. And petrol, more people are going towards petrol. People go for petrol. Because in Goa petrol and diesel price is almost the same. So and in terms even now i20 is come with a turbo engine. So if people are looking for a better pickup, then they go for a petrol because So old i20 is totally discontinued now, and all variants has been already sold. already sold. Okay, so now almost i20 means you can go for this variant only, this option only. So you can see guys how's the car from back. So you are getting 2 sensors here and camera is there. So you can get good view from while driving also, and LED lights and all you can see dosto. So many people will say that this almost looks like Volvo also. Yes, I can say that. Okay, and you are getting defogger and all you can see rear wiper also you are getting. So if you go for this top variant you are getting too many features. Asta is giving you more features. If you go for base variant or second base and all, some features will be missing in the car. So it's up to you guys. If you want to go for higher variant you can go, and this is turbo, looks very good. And in Goa as they are saying dosto, turbo variant is getting more bookings. So for this today's test drive review we are having the sales executive for Hyundai showroom Mapsa. We are having Sanghavi Raikar. So thanks to them, they have helped us in our review.